उसके बाद फिर वो कहते हैं सेलम लगाओ या फिर वापस जाओ। इन्होंने डलवा ली, धक्के से डलवा। मेरे से अकेले से नहीं, 15-20 थे हम, सबसे डलवाइए। तो किसी ने कहा बीजेपी से खतरा है, किसी ने कहा मेरे पार्टनर से खतरा है, किसी ने बोला कि हमारे खेतों में जमीन के पीछे लड़ाई है। ये तो धक्के से डालते जी, बिल्कुल धक्के से इमिग्रेशन वाले। तो यूएस गया कैसे तू बिना पासपोर्ट के? कैसे, कौन से रास्ते से टापा? तो डोंगर होते हैं, गाड़ी में लेके जाते हैं, वहाँ छोड़ देते हैं रोड पे, जंगल में से निकल के। सो इंडिया में तेरे से टोटल कितने पैसे लिए एजेंट ने ये सारा यूएस तक भेजने के लिए? कनाडा तक लिए कि मेरे से तो कितने? 17.5 लाख। हाँ जी, हाँ जी। इज़ दिस द टाइम टू ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ? ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਕੈਮਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ। 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਲੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀ ਉਹ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੀਅਰਸਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ 15 ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ CBSA ਆਫਿਸਰਸ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਟੇਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। CBSA ਆਫਿਸਰਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕਰੂਟਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ, ਔਰ ਸਕਰੂਟਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ 8 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ, 20 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪੀਅਰਸਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਦ ਫਲਾਈਟ ਲੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ, CBSA ਆਫਿਸਰਸ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਫੇਕ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ CBSA ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜੇ CBSA ਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਐਂਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਲਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਏ ਲਾਅ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ CBSA ਆਫਿਸਰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਫੇਕ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਕੈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਆਏ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਲੂ ਮਾਊਂਟੇਨ ਗਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਬਲੂ ਮਾਊਂਟੇਨ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਲੂ ਮਾਊਂਟੇਨ, ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਿਫਿਊਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ CBSA ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ IRB ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਅਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਰ ਗਲਤ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦ ਰਿਫਿਊਜੀ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਫੇਕ ਕਲੇਮਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਲਿਸਨਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀਏ। We got reports that many people from overseas, they are entering Canada via airports on visitor visas. There are many incidents in last couple of months. First incidents happened and social media is full of these reports that on 8th of July, Air Canada flight landed at Montreal airport with more than 40 passengers on visitor visa from India. And many of them, they had fake documents. Many of them were genuine. And many of them, they were questioned by the CBSA officers. The scrutiny was very tough. And many people, they came on social media and said that CBSA officers were forcefully advising them to apply for the refugee status. So officers found that they had fraudulent documents. After this, CBSA officers gave them two options. Like, your documents are fake, either return back to your home country, or if you have any threat in your home country, you can apply for asylum status. You can apply for asylum status, which is a refugee application on the airport. The applicants told us that CBSA officers convinced them forcefully that in any case, if they need entry to Canada, even though they had a fraudulent documents, they should think of any incidents of back home and apply for refugee status.
Many of them already applied. Many of them, they said, we have families at back home and we don't want to apply. So we will share a story with you. One of the individual who landed here on 20th of July by Air Canada flight, and he shared whole story, how it happened, what were the question answered by CBSA officers on the airport, and what happened after that, how they got entry in Canada with fake documents. So after these all social media reports, we tried to reach out to CBSA office and we asked them few questions. But CBSA office declined to do an interview with us. But we put few questions to CBSA which they replied via email. So our questions were, if the individuals, the visitor visa people, if they had the fraudulent documents, then why the visitor visa was issued at first incidence by immigration? What kind of options CBSA officers gave the individual after they found that documents are fake? How officers make sure that individuals are not making up the fake claims? So far, how many individuals or visitors applied for refugee claims on the airport after getting the visitor visas? And the last question by us to CBSA was, if they found that documents are fraudulent, fake, why CBSA is not deporting them, why they are giving them an asylum option, why they are not giving them, deporting them from the airport, because many of them are having fake documents and they are entering Canada via refugee. Now question is this the time to investigate? Is this a harassment on the airport or the refugee scam? Name it accordingly. As we discussed, the incidents first, Air Canada flight AC51 landed at Montreal airport on 8th of July. Over 40 passengers from India on visitor visas were told by CBSA officers to apply for refugee status or return home. Some were on their second or third visit to Canada. There were also media reports in the social media also that CBSA is turning back Indian and Nigerian visitors at airport. These reports are going on in the social media for last couple of months. Recent reports indicate that CBSA officials have been turning back many Indian and Nigerian visitors at Canadian airports, offering them the alternative of applying for refugee status. The issue surfaced because of CBSA's increased scrutiny, which has denied entry to genuine family members with approved visitor visas. Some of these individuals are on their second or third visit to reunite with their families. So, ਇੱਥੇ ਦਸੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੈਨੂਅਨ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਕਰੂਟਨੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ CBSA ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਅਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਅਨ ਵਿਜ਼ਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਫਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੈਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. A recent incident reported, multiple incidents have been reported at Toronto and Montreal airports over the past few months. A notable case involved over 40 Indian visitors who arrived on Air Canada flight AC51 at Montreal airport on 8 July. They were refused entry and asked to return to their home country. Or alternatively, they were given the options to apply for refugee status. And as I mentioned before, that some of these individuals were visiting Canada for the second time or the third time. Many were not able to explain their purpose of visit. Similar incidents have been reported by the Nigerian diaspora. In May, a group of tourists in Montreal were reportedly forced to apply for refugee status for about 12 hours. So we got a CBSA clarification. We reached out to CBSA and we tried to ask them few questions, but they declined our request to do an one-on-one interview. That request was declined by CBSA, but they gave their clarification via email to us. So CBSA spokesperson Rebecca Pody, when she was reached out to provide a clarification, she said that a visa does not guarantee entry into Canada. Even someone has previously entered Canada with a visa. A valid visa does not guarantee entry on a subsequent visit. So CBSA officer ਜਿਹੜੀ spokesperson ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, clarification ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੇ. CBSA ਆਫਿਸਰਸ ਸਾਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈ. ਦੇ ਆਰ ਵੈਲ ਇਕਵਿਪਡ. ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਫੇਕ ਹੈ ਕਿ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ.
ਸੋ CBSE ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ here is the information we can provide in response to our questions we respectfully decline your request for an interview so CBSE role at ports of entry is to assess admissibility of persons coming to Canada on arrival at the Canadian port of entry all travelers must demonstrate that they meet the requirements to enter Canada and may be subject to more in-depth examination. Admissibility is decided on a case-by-case basis and based on the information made available at the time of entry. It is important to know that having obtained a visitor visa or having been previously authorized to enter Canada does not guarantee the right to enter Canada. Only certain people enter Canada by right as per the section 19 of IRPA. Foreign nationals seeking to visit, study or work in Canada must establish that they hold a valid visa if required and that they will leave Canada by the end of their period authorized for their stay. Section 180 of the Immigration and Refugee Protection Regulation is clear that a foreign national may not enter Canada as a temporary resident unless they continue to meet the requirements at the time of examination on entry into Canada. And CBSE is aware that some travelers may attempt to use fraudulent or fraudulently obtained documentation to gain entry to Canada. We take this issue very seriously and work closely with our partners to help maintain the integrity of Canada's immigration system. CBSE officers are trained in interview, examination and investigative techniques, including on how to identify fraudulent documents. They have up-to-date information on lost and stolen documents and use advanced information, intelligence, innovative technology and information sharing to carry out their mandate. Individuals are legally required to provide truthful information and genuine documentation when applying for a visitor or ETA when presenting to the CBSE upon arrival in Canada. When we become aware of the situations involving the use of fraudulent documents or other violations of IRPA, the CBSE investigate and take appropriate action. Since the CBSE does not have legal authority to cancel temporary resident visas, it refers cases to visa fraud back to the Visa Issuing Authority, Immigration, Refugees and Citizenship Canada, IRCC to review and potentially cancel the visas obtained through fraudulent means. Persons who disregard Canada's immigration laws may face serious consequences, including criminal charges, court fines, probation, imprisonment and a criminal record. Pursuant to Section 148 of the IRPA, commercial transporters such as airlines must ensure that their passengers are properly documented for travel to Canada. This includes ensuring that their passengers are not traveling using fraudulent documents or are imposters. The CBSE does not direct travelers to make refugee claims. So ਇੱਥੇ clear ਹੁੰਦਾ ਹੈ CBSE ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ that CBSE ਕਦੀ travelers ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ fake refugee claims ਕਰੋ ਜਾਂ refugee claims ਕਰੋ. So CBSE does not direct travelers to make refugee claims. Should a traveler seek a make to refugee claim upon arrival in Canada, the CBSE will determine whether or not the claim is eligible under the additional protocol of Safe Third Country Agreement and the IRPA. If eligible, the person's file will be referred to the Immigration and Refugee Board of Canada for consideration and the person will be authorized to enter Canada to pursue their claim for protection. If the file is ineligible, they may be removed from Canada. The CBSE takes its border protection responsibility very seriously and supports priorities related to national security and the safety of Canadians and their communities. We also welcome tips from the public. So a visa is not a guarantee of entry. It is important to note that Canadian visa, including a visitor visa, does not guarantee entry into Canada according to Canadian laws. CBSE officials have the authority to deny entry if they find discrepancies or if the purpose of visit is not clear. However, a major concern is that CBSE officials are offering individuals the option to apply for refugee status after denying them entry. This adds pressure to Canada's already strained refugee system and the increasing number of international students applying for asylum. On the social media users, they have expressed confusion and concern. The situation has caused concern and outrage among temporary and permanent residents in Canada who have families planning to visit soon. So this was the reply by CBSE officer on our questions. So we put them the questions, but they, as I mentioned, they declined the interview, but they gave their response on that.
ਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ CBSA ਆਫਿਸ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਰਿਪਲਾਈ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਲੈਂਡ ਕੀਤੇ। ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੀਅਰਸਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਗਏ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਡੋਂਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਐਡਸ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਖੁੱਲੀਆਂ ਐਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਹੈ $3000 ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਜਸੀਂ ਇਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ $80,000 ਦਿੱਤਾ, ਮੀਨਸ 1300 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪੇ ਕਰਕੇ US ਚਲੇ ਗਏ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਟਾਰਨੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ ਦੀ ਆਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ US ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਰਿਫਿਊਜੀ ਦੀ। ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਇਲੀਗਲ ਰਸਤੇ US ਗਏ, ਉੱਥੇ ਫਾਈਲ ਲਾਣੀ ਹੈ ਰਿਫਿਊਜੀ ਦੀ ਵਿਦ ਦ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਵਾਈਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। दैट इज़ द स्टोरी। So this individual whom we are going to talk now, this conversation is in Punjabi. This individual, he landed in Canadian Pearson Airport on 20th of July with the fake documents. CBSA found that this individual has a fake document. 15 such people, they landed on 20th July on Pearson Airport. Before that, 40 plus people landed at Montreal Airport. And this individual whom we are going to talk now, he mentioned that he had fake documents, his education certificates were all fake. CBSA officer found out that he has a fake documents. Then CBSA officer gave them an option that go back to your home country since your documents are not matching, they are fake. But this individual refused to go back to India. Then CBSA officer gave them an option that okay, then you have a second option. If you don't want to go back to your home country, do you have any threat in your country? These are the asylum papers, you can apply for that. And this individual applied for the asylum on the airport, filled up the form, then he had 45 days to meet his lawyer. And he never met his lawyer here in Canada. What he did, he entered Canada with fake documents, and by paying 1,300 Canadian dollars, he went to Montreal, and from Montreal he went to New York in US via illegal route. So when we talk to this individual who came here on a fake documents, many of them, 15 people came as a visitor on 20th July, 40 plus came on 8th of July. And when we talked to this individual, he told us that he paid 17 lakh Indian rupees to agent in India, which is approximately 28,000 Canadian dollar. And the work of agent was to get him enter in Canada on fake documents. Then this individual whose name we are hiding, whose picture we are hiding, he told us that with that money, the deal was entry into the Canada with fake documents. And then he stayed in Canada for 2 to 3 days, then via route, illegal route, landed at Pearson Airport, went to Montreal, then from Montreal via the illegal route, he entered New York, and in New York he met the attorney, and with the attorney he is applying for a refugee status. His passport is still with the CBSA. So question lies here that when CBSA found that they have the fraudulent documents, their purpose is something else, why we are still giving them the entry? When they have a fake documents, how come they are a refugee? How come they can apply for asylum? So this is the time to investigate. Is this the harassment on the airport, as we said, or these are the refugee scams? So before giving visitor visa, why immigration department never check the documents are real or fake? Why they are issuing the visas to individuals? Next question was on finding on the airport by CBSA that individual has fake documents. Then why those people not deported back at the same time before giving them asylum or option? So as I said, the social media is full of these kind of reports that if you want to go illegal from Montreal to New York, pay $3,000. And this individual went only with $1,300. He crossed Canada-US border. If the individuals can cross the borders, why can't our
like in our country, in Canada, the guns, the drugs can enter easily, and that is happening. That's why the crime rate is very high in Canada, because people are smuggling our vehicles, cars are going out of the country. Illegal people, they are coming to Canada on fake documents, and then they are going to US with illegal routes. So now we will play that recording which we discussed, which we talked to this individual who entered Canada on 20th of July with fake documents, took an entry to Canada, entered Canada, then in couple of days he went to US, New York with fake documents, with illegal route. Let's hear what he has to say. उसके बाद फिर वो कहते हैं सेलम लगाओ या फिर वापस जाओ। ऑफिसर ने कहा, हाँ जी उन्होंने बोला। फिर आपने क्या किया? तो मैंने उनको उनको मैं नहीं, अगर आपको नहीं मतलब विश्वास है मेरी टिकट देख लो, रिटर्न टिकट चेक कर लो, होटल बुकिंग चेक कर लो। फिर भी मानने नहीं। मैंने यहाँ पे काम करो, मेरा पासपोर्ट रख लो, मेरी 31st की वापसी है 10 दिन बाद की, मैं आपसे ले जाऊंगा अपना पासपोर्ट। फिर भी नहीं मानने। ओके, कहते हैं सेलम। फिर मैंने डलवाई ली सेलम एयरपोर्ट के ऊपर ही। हाँ जी, इन्होंने डलवा ली, धक्के से डलवा। मेरे से अकेले से नहीं, 15-20 थे हम, सबसे डलवाई है। तो उन्होंने खुद आपको फॉर्म दिया असाइलम के? असाइलम में क्या, असाइलम में रीजन देना होता है क्या? रीजन उन्होंने बताया, रीजन ये डालो कि आपने खुद ने रीजन डाला कुछ? रीजन फिर मैंने खुद ही बताया उनको। क्या? जैसे मेरा इंडिया में झगड़ा हुआ था 2012 में। हाँ। तो एक FIR थी, तो मैंने एडवोकेट से FIR नंबर मंगाया। हाँ। तो मैंने बोला मेरे को तो इस बंदे से खतरा है जी। ओके। फिर मैंने वो FIR दे दी उनको। हाँ। बस यही रीजन डाला है मेरा। तो किसी ने कहा बीजेपी से खतरा है, किसी ने कहा मेरे पार्टनर से खतरा है, किसी ने बोला कि हमारे क्षेत्रों में जमीन के पीछे लड़ाई है। ये तो धक्के से डालते जी, बिल्कुल धक्के से इमिग्रेशन वाले। तो इन्होंने इससे बेटर तो वीजा दे हुई ना। आपके डॉक्यूमेंट गलत है, वो तो एजेंट की गलती है, लेकिन असाइलम अप्लाई करना तो बहुत ही अलग चीज है कि 15 के 15 बंदों को ऑफर कर दी गई है कि आप असाइलम अप्लाई करो। फिर ये तो इनकी गलती है ना जी। तो क्या गलती क्या थी डॉक्यूमेंट में? सिर्फ एक जो जैसे मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, उसने ना एजेंट बीटेक का लगा रखा था। तो उसने आपको बताया नहीं बीटेक का? नहीं बताया उसने। ऑफिसर की स्टेटमेंट क्या थी एग्जैक्ट? मैं सुनना चाहता हूँ कि ऑफिसर की तो यही थी स्टेटमेंट की, भाई या तो वापस जाओ या यहीं रहो, असाइलम डालो। तो जो 15 के 15 लड़के थे, सबके डॉक्यूमेंट्स में गलती थी? हाँ जी, होएगी तभी। ये तो कह नहीं सकते कि उनके डॉक्यूमेंट में उनके धक्के से डाल रहे तो असाइलम। मुझे लगता है, और तेरे को कोई खतरा नहीं जान का वहाँ पे, ये तो गलत तेरे को अप्लाई तूने कर दिया या करा दिया, जो भी आपका है। हाँ भाई, जैसे मेरी 31 की रिटर्न टिकट है, 31 को हो सकती है मेरी वापसी। हाँ हो सकती है, 31 की रिटर्न है, हो सकती है। तो जो ने बिना शक एयरपोर्ट चले जा, जहाँ पे अप्लाई किया था वहाँ पे उनको बोल वहाँ पे कि अपना मैंने ये मेरी फाइल यहाँ भरी थी, मेरी विड्रॉ करनी है फाइल मैंने। और मेरे दोस्त के भी फोन आ रहा, वो मेरे को कह रहा है तू यहाँ से मॉन्ट्रियल से US से आ जा। तो वो कैसे जाएगा US से मॉन्ट्रियल से? कहते मेरा जानकार है, वो दवा टपवा देगा। कितने पैसे लेगा? 2 लाख रुपए का। 1.5-2 में मेरे पे पैसे है ही नहीं है भैया। नहीं यार, मुझे पता नहीं आपने क्या करना चाहते हो। मैं इसमें कुछ, क्योंकि पहले तो वहाँ से गलत डॉक्यूमेंट से आए हो, फिर यहाँ पे रिफ्यूजी लगा दिया, अब यहाँ से US चले जाओ। वो भी इलीगल काम है ना सारे? बिल्कुल है जी, सारे इलीगल काम है। मैं तो उसमें कुछ नहीं आपको सलाह दूंगा इलीगल में। मैं तो नहीं कभी कहूँगा कोई भी गलत काम करो। मैं इस पे गया था एडवोकेट पे। अच्छा। आज आइस वाला था, आइस का होता है ना। हाँ USA में। हाँ, वो करवा के आया था। नहीं तो अब कनाडा से US चला गया? हाँ जी न्यूयॉर्क में। बट यार तू तो कह रहा था तेरा पासपोर्ट CBSA के पास है। फिर यहाँ आ गया था मैं कूद के। यहाँ पासपोर्ट जमा होता नहीं ना, यहाँ तो केस चलता है सेलम का। यहाँ डाल दूंगा, वर्क परमिट आ जाएगा। नहीं, कभी जाना होगा व्हाइट पासपोर्ट बनवा लूंगा। नहीं बट ओके, क्योंकि तूने यहाँ पे कनाडा में रिफ्यूजी क्लेम नहीं लगाया फिर? क्योंकि बस मेरा 45 डेज का टाइम होता है ना आपको, 45 दिन के अंदर लगाना होता है। हाँ बस यही लगा दिया जी मैंने USA में। अच्छा, दोस्त वगैरह मेरे ही थे। अच्छा फिर US गया कैसे तू बिना पासपोर्ट के? कैसे, कौन से रास्ते से टापा फिर? है जी रास्ता है, जंगलों के पास है। अच्छा, तो डोंगर होते हैं, गाड़ी में लेके जाते हैं, वहाँ छोड़ देते हैं रोड पे, जंगल में से निकल जाओ। ओ अच्छा, तो कितने पैसे लिए डोंकर ने? कितने पैसे लिए डोंकर ने?
उसने जी कम ही लिए वैसे, 80,000 में लिए इंडिया के हिसाब से, $1300। $1300। अच्छा कईयों से लेते हैं 2.5 लाख, कईयों से 5-5 लाख भी लेते हैं। अच्छा, तो $1300 में तो तो वो कोई जानकार मिल गया था मेरे को। तो अब यूएस में तो मिल लिया, टॉडनी को मिल लिया तूने? हाँ, अभी एडवोकेट से ही आया हूँ मैं, हिना रोड बस से। तो क्या कहता है एडवोकेट फिर? हाँ, वो वर्क परमिट आ जाए, क्लॉक शुरू हो जाएगी मेरी मंडे से। अच्छा, अब अगर इंडिया जाना हो यूएस से तो क्या करेगा? व्हाइट पासपोर्ट बन जाता है जी, आ जाता है 10-15 दिन तक। व्हाइट पासपोर्ट? वो क्या होता है व्हाइट पासपोर्ट? व्हाइट पासपोर्ट होता है जी, बस दोबारा अमेरिका नहीं आ पाएगा बंदा, हाँ। अपना इंडिया भेज देंगे जी, टिकट कराओ इंडिया जाओ। अच्छा, तो बट वो इमिग्रेशन से बनता है, एमएससी से। बट वो तो चलो उसकी जरूरत नहीं, तो यहीं पे रहेगा यूएस में, तो कितने साल बाद तेरी यहाँ पे कोई वो वर्क परमिट या कितने साल बाद आएगा, कुछ ऐसा कुछ है? वर्क परमिट 6 महीने में आ जाता है, 5 साल का। फिर अपनी वाइफ और डॉटर का क्या करेगा? 5 साल उनके बिना रहोगे? नहीं, उनको भी बुला लेंगे जी अपने पास। अच्छा, ऐसे फैमिली अलाउड है ऐसे रिफ्यूजी पे? उनका लीगल तरीके से बुला लेंगे ना, वीजा लगवा के। अच्छा अच्छा, हाँ जी। चलो। यार इसकी लॉयर कितनी फीस लेता है वहाँ पे? ये $8500। काम मिल गया तेरे को? काम में यहाँ स्टोर में ट्रेनिंग आज से मेरी शुरू ना, 15 दिन की ट्रेनिंग तो फ्री होती है। अच्छा, कहाँ पे? न्यूयॉर्क में? तो पहले न्यूयॉर्क था जी, अब मैं यहाँ गया, जॉर्जिया आ गया अपने फ्रेंड के पास। अच्छा, जॉर्जिया। इंडिया से ये एजेंट सारा कुछ ये प्लान करके भेजते हैं, से क्या करते हैं? पता नहीं जी, एजेंटों की एजेंट ही जाने। बस जी इनके तो जिम्मेवारी होते हैं, कनाडा जाना, कनाडा तक छोड़ने की। सो इंडिया में तेरे से टोटल कितने पैसे लिए एजेंट ने ये सारा यूएस तक भेजने के लिए? कनाडा तक लिए जी मेरे से तो। कितने? 17.5। साढ़े 17। 17.5 लाख? हाँ जी, हाँ जी। जैसे कनाडा में $1200-1300 मंथली रिफ्यूजी को देते हैं, यूएस में भी देते हैं? नहीं जी, वहाँ पे कुछ नहीं देते रिफ्यूजी को? नहीं। लीगल तरीके से यहाँ पे आते तो लाइफ बहुत अच्छी थी यहाँ पे सारी। बस जी सारी दुनिया से कर रही, तो हमने अपने भी कर दिया ऐसे। अच्छा। सारी दुनिया से आ रही है। आपने 17 लाख एजेंट को दिया, तो आप कहते मैंने एंटर कनाडा में होना ही होना इस करके। हाँ, फिर भी अगर मैंने तो उनको भी बोला मेरा पासपोर्ट रख लो तुम। हाँ, मैं 31 को मैं वापस चला जाता हूँ। ठीक है। बननी नहीं, यही होता है, खुद ही फॉर्म दे दिया उन्होंने हाथ में असेलम का, मेरे असेलम डालो। हाँ, फिर रीजन लिख दो और हमसे आईडी लौट जाओ। रीजन लिख दोगे वहाँ पे खतरा है इंडिया में? हाँ जी, हाँ जी। तो सारे जितने 15 लड़के आए थे आपके साथ, सब ने असाइलम लगाई? हाँ, सब नहीं। तो सब ने क्या क्या रीजन दिया अलग अलग? बस जी वहाँ किसी ने बीजेपी से दिक्कत है, किसी को कांग्रेस से दिक्कत है, अलग अलग। अच्छा, तो उसका प्रूफ कोई नहीं है ना? प्रूफ आपको पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा है यहाँ? नहीं, प्रूफ मांगा उन्होंने कोई कि इसका प्रूफ दो के? नहीं। So we heard what the individual had to say who came here on fake documents. So question is it the time to investigate? Is it the time to make more strict immigration system? Is it the time that individuals or these kind of fraudsters or the agents, they should be put behind the bars or they should be made accountable? Does our immigration system need to put more measures in place so that no one should misuse the loopholes in our system? So is it the time to investigate?